की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश किया गया है। लोकसभा में यह संशोधन बिल पेश हो चुका है। आपको बता दें कि किरेन रिजिजू ने इस बिल को पेश किया है। अभी इसी पर चर्चा चल रही है। तो वहीं कांग्रेस ने बिल का विरोध किया है। ये बिल संविधान पर हमला है, ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि बिल सर्कुलेट 6 तारीख को हुआ है। एमपी अब्बू समदानी मोहम्मद बशीर नहीं आप बोलेंगे वो बोले, दोनों में से एक बोलेंगे, कोई बोलना myself. अच्छा Sir, thank you very much, sir. I vehemently oppose the very presentation of this bill. As correctly pointed out by my learned friends, this is a clear violation of the Constitution. It is a violation of the fundamental right enshrined in our Constitution. Article 14, Article 15, Article 25, Article 26, and Article 30. Sir, this bill is ill-motivated, sir. You have got dirty agenda with you in bringing this. Sir, if this bill is passed, the entire Waqf system will be collapsed, sir. That is going to happen. Similarly, sir, various bodies, Waqf Board and Waqf Council, all these bodies will have no existence. They will not have any value because all the powers vested with these bodies are captured by the government and handed over to the district collectors. It's a funny thing, sir. Similarly, sir, this will spoil this secular nature of this country. Yes. Muslims cannot donate to the Hindu system and they cannot donate to Waqf system. That is the restriction. Are you not ashamed of making this country in this way, sir? What is happening in this country? You have forbidden that kind of thing, sir. At the same time, this will jeopardize all the system. Now, Waqf Board and Council, if you go through that bill, sir, what is happening? They have no any power. All the powers are going to be vested with the collector. As per this act, collector is superior than the chairman of the Waqf Board, sir. That is the system we can see in this, sir. Sir, the funny thing is not that, sir. Once this bill is passed, the evacuation of the encroached property will become impossible. That is the funny thing, sir. This bill says that once government is an encroacher in this, government building is situated in the Waqf land. Even after verifying, if that is cleared, then also it cannot be evacuated. So in fact, sir, you are encouraging encroachment on Waqf land. That is another thing, sir. Sir, another thing, we can very well understand. Powers of the Waqf administration, they will have no, this chairman and the Waqf Board members, they will have no any power. In this various bodies, in the Parent Act, there was a clause. What was that? From various constituency, members are there. There was a stipulation that they should be Muslims. But here, you are saying only 2 names. That should be non-Hindu, non-Muslims. Even the name of a Muslim is not mentioned in this, sir. It means that you want to engross the entire system according to your liking. That is what is happening, sir. Yes. And we have to understand one more thing, sir. Government is trying to create a lot of injustice, sir. Because we had a lot of work. I have participated in 50 in the Lok Sabha. A JPC was constituted under Mr. Rahman, our leader, community leader, Umar Khan. He made a wonderful report, sir. It was very clear. There was a lot of good thing. You are repealing all these clauses. After a lot of study, Rahman Khan committee recommended certain things and amendment was made accordingly. Now you are repealing all these clauses. So what I am saying is, you are cruel in this. You have to be sympathetic in this, sir. This legislation, you are killing, ruthlessly killing the system, the Waqf system. I urge upon you to prevail wisdom. You must think about that. Don't poison this country in a different way. That is what you are doing.
Your intention is to spoil this country's communal. What you are doing is, you are putting Hindus and Muslims in watertight compartment. You may have that desire, but we will not allow this country to go in that direction. Sir, with this word, I conclude. Thank you very much. Okay. K. Radhakrishnan. Sir, I strongly oppose the Waqf Amendment Bill on behalf of Communist Party of India Marxist. Sir, this is against our motto, unity in diversity. This bill has breached our constitutional right of practice of religions. This bill has violated the constitutional Article 25, 26, 27, 28 and 30. As per the bill, the Waqf Board will become a nominated body. Only intention of this bill is to demolish the Waqf. Before bringing this bill, no consultation has been done by the government with any states or with a Muslim or other organization. So the government want to withdraw this bill. We demand, if not done, send it to the standing committee for wide consultation. Thank you. श्री N.K. प्रेमचंदन, आप नोटिस और आप नियम के तहत ही बोलते हो? Yeah, my notice is there, sir. नहीं, First आप of all, रूल्स के तहत ही बोलते हो? yes, sir. First of all, I would like to express our sincere thanks to the Honorable Speaker. This is the first time during the last, my experience, when a bill is opposed on the ground that it is outside the legislative competence of the bill. The Speaker has the authority to grant a full-fledged discussion, and the first time you have allowed for such a discussion, we are thankful to you. Sir, that is 72, second proviso, Rule 72(2), 72(1), second proviso. Sir, I vehemently, very strongly oppose this Waqf Amendment Bill 2024 under Rule 72(2) of the Rules of Procedure. 4 reasons I am suggesting. Number 1 is the provisions of the bill violates fundamental rights envisaged in Article 25 to 28 of the Constitution. It violates Article 13(2) of the Constitution. And the third one is the bill is against the basic feature of secularism enshrined in our Constitution that cannot be altered, because it is the basic features of the Constitution that cannot be altered or changed. And the last one is the statement and objects and reasons narrated in the statement of objects and reasons are not sufficient to bring a new legislation. These are the grounds by which I am opposing the introduction of this bill. So the sole intention of the Waqf is for the better administration of Waqf properties. Waqf is a permanent dedication by any person or any movable property or immovable property for any purpose of a recognized by the Muslim law. And it is considered as a pious, religious and charitable activity. It is absolutely a religious activity come within the purview of Article 26 of the Constitution. This government is intruding into the religious freedom of a particular community, that too Muslim. And you are particularly targeting the community Muslim, sir. That is the real case by which, sir. So, sir, coming to see, if you go through the legislation, it is very interesting. If you go through the legislation, you are disempowering the Waqf Board as well as the council, and to determine whether a property is a Waqf property or not, it is being declared by the collector or the government. And 1 or 2 seconds, and you are removing section 104, removing section 40 means there is no need of a Waqf Board. The Waqf Board become totally powerless.
That means you are dismantling the system. So, totally it is a dismantle of the system. So, sir, it is absolutely against the principles of Constitution, and also it is lacking bona fides also. And further, I would like to quote Article 13(2) of the Constitution. Kindly see Article 13(2) of the Constitution. That is Part 3, very specific. That is the laws in consistence with or derogation of the fundamental rights. Sir, Article 13, Clause 2, I quote, "The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in connection of this clause shall not, to the extent of the contravention, be void." So, sir, I caution this House, I caution the government that if law is, you can very well pass. You are having absolute majority in the House. But I caution this government, if it go for a judicial scrutiny, definitely this bill will be struck down on the constitutional grounds. It is outside the legislative competence of this House. I'm very sure that is. तो लोकसभा में आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड जो बिल है वो यहाँ पर संशोधन के साथ पेश किया गया है, उसी पर चर्चा फिलहाल चल रही है। तमाम अपोजिशन की तरफ से बिल को लेकर के विरोध किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने भी वक्फ बिल का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए जो उसके सांसद है मोहिबुल्लाह का उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और मोहिबुल्लाह ये बिल मौलिक अधिकार के खिलाफ है। सर, सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़्फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़्फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे। मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? तो आपको बता दें कि सदन में जिस तरह से ये बिल पेश हुआ है और पेश होने के बाद से इस पर चर्चा चल रही है, अपोजिशन की तरफ से लगातार जो तमाम बातें सामने आ रही है, वही समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह की तरफ से ये बात कही गई कि ये मुस्लिम के अधिकारों का हनन हो रहा है। और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं नवीन का, उनसे हम जुड़ लेते हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। नवीन, फिलहाल हम आपसे सवाल करें, आपसे जानने की कोशिश करें कि अभी और क्या स्थिति हो रही है, जिस तरह से लगातार अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरह से अन्याय, मौलिक अधिकार का हनन, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, इन तमाम चीजों पर। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को यह दिखा दे कि ये बिल जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के साथ पेश हुआ है और इंडिया डेली के पास इसका ये एक्सक्लूसिव कॉपी जो है वो पास में है, तो हम ये दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें 40 संशोधन के साथ इसको पेश किया गया है। और ये बिल देखिए, यहां पर लिखा भी है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, और इसी के साथ सारे यहां पर जो 40 संशोधन है वो यहां पर किए गए हैं। उसके साथ क्लॉज यहां पर भी दिए गए हैं कि किन किन क्लॉजों के तहत जो तमाम बदलाव है, तमाम चेंजेस है जो वो किए यहां पर जा रहे हैं। तो ये बिल इंडिया डेली के पास एक्सक्लूसिव है और ये हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि इसी के आधार पर अब हम इस चर्चा, इस बातचीत को जो है आगे बढ़ाएंगे। नवीन, आपका रुख करेंगे क्योंकि लगातार जब से वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के साथ पेश होने जा रहा है, कैबिनेट में 40 संशोधन जो है उसको मंजूरी मिल गई, लेकिन अब लोकसभा से पास करते हुए राज्यसभा की तरफ रुख करना है। आज लोकसभा में पेश हुआ है, हंगामा बहुत देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, हम चाहेंगे वो आप हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए जो बता दें कि जो वक्फ एक्ट संशोधन बिल है वो लोकसभा में पेश हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया है और इस पर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हंगामा कर रहा है और एक सार्थक चर्चा की मांग की जा रही है। सत्ता पक्ष है, यानी जो इंडिया अलायंस है। Government has sought to severely restrict how Muslims can manage their waqf property. Sir, in fact,
Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you're asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you're doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you're doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you're doing, you're restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There's no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, 1-2 minute दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of right to justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DOM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our... Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर. सर मैं खत्म कर रहा हूं. Secretary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है. सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं. मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है. और वहीं सीधे अब हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं. वहां से हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं. वहीं हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता नवीन भी जुड़े हुए हैं. हम बातचीत करेंगे. नवीन, पहले हम आपके पास आते हैं क्योंकि वो सवाल अधूरा था और उसका जवाब आप दे रहे थे कि जिस तरह से लगातार ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कैसे क्या होना चाहिए, नाराजगी उनकी पूरी तरह से दिख रही है. अभी हमने असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना. बिल्कुल, देखिए जो तमाम विपक्षी दल हैं वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं. और कुछ दलों का ये कहना है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो इस बिल को पेश कर रहा है और ये कहना है कि इससे जो वक्फ बोर्ड की जो अनियमितताएं हैं वो दूर होंगी. वक्फ को बल देने का काम कर रहे हैं. साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर यह शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है. और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते कि
उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं। उन फलाही कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं। श्री जीएम बाल योगी, श्री जीएम हरीश बाल योगी। Thank you, Speaker, sir. 1 मिनट को बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूं 1 सेकंड के अंदर। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की। अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएम हरीश बाल योगी। Thank you, Speaker, sir. We appreciate of the concern with which the government has brought this bill. Properties and lands for religious purpose have been donated in every religion. The purpose of the donors need to be protected. Sir, और चलिए सीधे आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष, जिस तरह से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कई बातें कही और ये सीधे तौर पे कहा कि देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि वहीं ये बिल कानून के खिलाफ भी कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष कह रहा है कि ये देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बिल हमने पढ़ा है, जो बिल हमने दर्शकों को अभी दिखाया है, जो कॉपी हमारे हाथ में है, उस बिल में कई खास प्रावधान है। सबसे अहम अगर हम बात करें तो जो धारा 40 है, जो वक्फ बोर्ड को असीमित पावर देता है, जिसमें यह कहता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, उस धारा को इस बिल में एबॉलिश कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। जो दूसरी अहम बात है कि जब वक्फ ट्रिब्यूनल किसी भी चीज का आदेश देता था, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर आदेश देता था, तो आप उसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख नहीं कर सकते थे। लेकिन अब 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट जाने का जो रास्ता है वो खुल गया है। तीसरी अहम बात कि जो सर्वे होता था, अब वो सर्वे जो होगा वो जो जिला कलेक्टर होंगे वो होगा। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी को क्लेम किया जाता है, तो उसके बाद जो जिला कलेक्टर होंगे, यानी जो सर्वे का अधिकारी होगा, वो जिला कलेक्ट्रेट होगा और वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार वो देगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं। चौथी जो सबसे अहम बात है कि बोहरा और आगा खानी कम्युनिटी, जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ये मुसलमानों में काफी पिछड़े हुए कम्युनिटी हैं, तो इनको लेकर एक अलग ही बोर्ड का गठन कर दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि बोर्ड में जो मौजूदा मेंबरान होंगे, उनकी जो सदस्यता होगी उसमें 2 महिला सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, जिसमें इसके अलावा एक में आशीष जी आपके पास वापस लौटेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।